Welcome back to Charbhuja Marble Presents Let's Discuss Designs, where we have been talking about interiors from the architects and interior designers themselves. In this episode, we have Mr. Deepak Gupta with us, who is a well-known in the field of architecture. Welcome to our show, sir. Hello, hi. So, sir, my first question to you is that what all challenges did you face in this profession? We cannot say initial challenges. I think you are more, if to be more precise, we cannot say challenges. We can say was more of a teething problem initially. I think our education system is very different as compared to what is required in the market. We are nowhere near. So actually the main challenge is when we come into the market and when we see everything what actually is happening, how the masons are working, how contractors are working, the lack of professionalism, the professionalism we are actually taught, and when we come in actually in the ground, it is very different. Okay. So those were the main challenges. And yes, when I started architecture, I don't think the clients were very much aware about architecture as such. In the high strata, people were aware about what is interior design and architecture. But talking about the whole mass, whole crowd, no, it was not like that. So those were the main challenges initially. So sir, when did it change? ये बदला कैसे? It actually happened very slowly. I think international exposure also had with that. People started interacting with countries like China, Europe, and when they came back, I think even then they thought, yes, we should also have something like that only. So I think yes, by looking at other people's house, other countries, going to other countries, that really improves your awareness about the architecture. So you think the market is better in like globally than in India? I think exposure to modern architecture was better globally than as compared to India. But now, yes, slowly we are coming at par with other countries. Yes, one challenge will always be there about being very original. I think we lack there. As in India, the designing is not very original. We may tend to copy as such. So my next question is that when it comes to a children's room, what marble you prefer for flooring? I will not prefer beige. I will go for greyish tone because I feel grey, light grey is more neutral. In the sense we can add colors which suits a boy or a girl or any other, because we can add pastel to it, we can add bright colors to it, we can do much more in a grey mode rather than in a beige, because in beige color we get fixed with the whole interior. And what about white? White, I think, is too pure for a kid's room. White can be okay, but I think grey will suits better. So you think children have grey shades? No, I am not saying that. We can add something to the grey. White is a difficult color to handle. Same way, beige has an entirely different. No color is bad. I am not saying that white is bad or grey is better or beige is better. It is every architect has his own perception. I think like that. Other architect will feel that beige, he can handle a beige color better, and the third one can handle a white one better. Sure, sir. Yeah. And when it comes to washroom, what color marble you prefer? Actually, it depends what type of theme I am going into it. I can go for a light color theme, I can go for a dark color theme, I can go for a theme where I may go for some gold or rose gold finish. That type, what marble will go with that rose gold, it depends on that also. So it depends on the whole theme, what is the story I am going for.
So sir, when it comes to making interior designing of an area, how do you decide a theme? To start any project, first we have to take an interview of our client. We must know what our client requires. Yes sir. This is the only reason why one project and other project are different, because what is client thinking for his future home, for his dream project, he may be thinking different, other client thinks different, and that gives our two project a different storyline. So when we get what is the storyline, we sit with our staff and then we think, yes, this client may be requiring this type of theme in his bedroom, in his lobby, in his washroom, every other areas. So this leads to the development of this design theme or story, you can say. जब हम ऑनिक्स की बात करते हैं तो where we can use ऑनिक्स according to you, मतलब what are your hotspots to use it? I'm not very comfortable with onyx actually. मुझे समझ नहीं आता कि मैं onyx without using light I can use it anywhere, but with light I cannot use it because the moment में हम लाइट जलाते हैं ना तो ऑनिक्स का कैरेक्टर चेंज हो जाता है एंड दैट बिकम्स टू फ्लैम्बॉयंट, इतना ज़्यादा ओवर हो जाता है. आई विल यूज इट वेरी स्पेयरिंगली टू एक्सेंचुएट एरिया कि भाई आई वांट टू हाईलाइट, बट स्टिल आई एम नॉट कंफर्टेबल विद ऑनिक्स. आई डोंट लाइक ऑनिक्स. मेरे प्रोजेक्ट्स में आप ऑनिक्स बहुत ही रेयर देखेंगे. इफ़ आई एम सेइंग कि मेरे प्रोजेक्ट्स में ऑनिक्स कम देखेंगे, इट इज़ नॉट दैट ऑनिक्स इज़ अ बैड स्टोन. कई लोगों को ऑनिक्स बहुत अच्छा लगता है, दे आर नॉट रॉन्ग. अब मैं कम यूज़ करता हूँ, आई एम नॉट रॉन्ग माई सेल्फ. हो सकता है कि आज नहीं, मैं बहुत ज़्यादा हम डेवलप करते हैं एज एन आर्किटेक्ट. आई थिंक हर एक कोई डेवलप करता है. जो मैं आज से बहुत साल पहले कर रहा था मे नॉट भी मैं आज भी वही करूँ. तो वी आर लर्निंग एवरी डे. तो जिस दिन मुझे पता चल जाएगा कि येस आई कैन यूज़ ऑनिक्स लाइक दिस, मैं जरूर ऑनिक्स को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ करने लग जाऊँगा. सर कुछ ऐसा है जो ट्रेंडिंग है और आप भी यूज़ कर रहे हो अभी करेंटली? ग्रे स्टोन इज़ लाइट ग्रे विद लिटिल ब्राउनिश स्टोन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. समथिंग सिमिलर टू सतवारियो इज़ ट्रेंड. बेज आई डोंट थिंक इस समय हम लोग यूज़ कर रहे हैं. पर अगर इफ़ यू गो इनटू अ क्लासिकल आर्किटेक्चर, जैसे हमारे कई क्लाइंट हैं जो कहते हैं हमें क्लासिकल या न्यू क्लासिकल चाहिए, देन वी हैव टू गो फॉर बेज विद और सतवारियो, क्योंकि इससे थोड़ा सा वो उस थीम में चले जाते हैं. लेकिन आई थिंक द ट्रेंड इज़ ग्रे इस समय. एवरीथिंग इज़ ग्रे, यू कैन सी. ओके सर. सर इट्स बीन लॉन्ग यू एसोसिएटेड विद चारभुजा मार्बल्स. सो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ऐसा क्या यूनिक हम कस्टमर्स को दे रहे हैं जिससे पीपल वॉक इन हेयर एंड यू लाइक कमिंग हेयर? एक तो एटीट्यूड. ओके सर. दीज चारभुजा गाइज आर रियली गुड. वी फील कंफर्टेबल और क्लाइंट्स भी आके कंफर्टेबल फील करते हैं. उनका क्या कहते हैं, जो इंटरेक्शन होता है क्लाइंट के साथ वो बहुत ही पॉजिटिव होता है. ठीक है ना. सेकंड, जो ये मटेरियल लेके आते हैं, आई फील कि वो दैट इज़ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री. मतलब द क्वालिटी इज़ वेरी गुड. और जिस टाइप के उनको पता है कि आर्किटेक्ट को क्या चाहिए. आई थिंक दे नो, क्योंकि जिस तरह के शेड्स ला रहे हैं, टेक्सचर्स ला रहे हैं, सब वो इवन द ग्रेनाइट्स दे आर वर्किंग ऑन, दे नो कि व्हाट टाइप ऑफ स्टोन्स एक्चुअली आर्किटेक्ट्स को पसंद है. अल्टीमेटली वी आर्किटेक्ट हैव टू बी डिफरेंट और हमें दूसरों से थोड़ा सा आगे रहना पड़ेगा. तो वो हमारे इस नीड को जानते हैं एंड दे वर्क अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. सो यू थिंक दे आर द ट्रेंड सेटर्स? आई थिंक आर्किटेक्ट्स आर द ट्रेंड सेटर्स. वो लोग दे नो और दे हेल्प अस टू बी अ ट्रेंड सेटर. मतलब दे प्रोवाइड अस कि द बेसिक्स जिसके हिसाब से वी कैन बी अ ट्रेंड सेटर. सर व्हेन वी मूव टू सम अदर फ्लोर्स ऑफ अ हाउस, डिफरेंट फ्लोरिंग, सो उसमें आप चेंज करते हो कुछ मार्बल्स को जाके, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे अलग लगाया, सेकंड फ्लोर पे कुछ और, थर्ड पे कुछ और, एंड हाउ इट डिपिक्ट्स, कैसे चेंज होता है? देखिए, हम एक थीम तो ले ही लेते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी वांट इन अ होल बिल्डिंग. तो उस थीम के हिसाब से अगर हम एक ही स्टोरी लाइन में चलेंगे, इट इज़ ऑलवेज बेटर. मतलब इफ़ माई दिस लॉबी स्पीक्स ऑफ दिस थिंग,
माई अदर लॉबी शुड ऑल्सो स्पीक ऑफ दैट. मतलब पूरा घर एक वो नहीं लगना चाहिए कि हमने वैराइटीज़ लगा दी हैं. यूनिफॉर्मिटी एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक स्टोरी लाइन होनी चाहिए. लेकिन येस, देयर आर टाइम्स व्हेन वी हैव टू कैटर टू द क्लाइंट बजट ऑल्सो. हो सकता है कि जो स्टोरी लाइन, जिस थीम और जिस यूनिफॉर्मिटी को हम की बात कर रहे हैं, वो हो सकता है कि उनकी कॉस्ट को एक डिफरेंट लेवल में ले जाए. तो अकॉर्डिंग टू दैट हम हो सकता है कि नीचे वाले फ्लोर्स में जो ज़्यादा विजिबल है, जो विजिटर्स को ज़्यादा दिखने को है, गेस्ट को, वो दैट कैन बी कॉस्टली, और उससे सिमिलर स्टोन्स हम ऊपर जा सकते हैं. सो व्हाट आर द टॉप स्पॉट्स टू यूज़ ग्रेनाइट, एंड उसकी फिनिशिंग कैसी पसंद है आपको? मैट, लेदर, लपाटो, व्हाट डू यू लाइक? ग्रेनाइट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मटेरियल. ग्रेनाइट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं. नॉर्मली मैं ग्रेनाइट्स को ओपन एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और जहाँ पे वी कैन आई एम एबल टू हैंडल द जॉइंट्स जो ग्रेनाइट के जॉइंट्स हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट आफ्टर पॉलिशेबल, मतलब ये प्री पॉलिश्ड आता है. तो हमें जब बाद में लगाने के बाद उसके जो जॉइंट्स हैं, वेयर आई कैन हैंडल द जॉइंट्स प्रॉपरली, आई यूज़ ग्रेनाइट इन दोज प्लेसेस. जहाँ पे मेरे को बिल्कुल स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस चाहिए होता है, वहाँ पे हम वी गो फॉर मार्बल, और या वी गो फॉर किचन काउंटर स्लैब्स, वी गो फॉर टेरेसेस जहाँ पे हम ग्रेनाइट्स यूज़ करते हैं, स्टिल्ट्स में करते हैं, ओपन एरियाज़ में ग्रेनाइट यूज़ करते हैं. आई प्रेफर रफ ग्रेनाइट मोर, नॉट इन किचन बिकॉज वी हैव टू हैव पॉलिश्ड ग्रेनाइट दे ओनली. बट आई प्रेफर रफ ग्रेनाइट्स विद डिफरेंट फिनिशेस. जो आप लपातो ला रहे हैं, जो डिफरेंट केमिकल ट्रीटेड ला रहे हैं, सैंड ब्लास्टेड ला रहे हैं, पैलेट ब्लास्टेड ला रहे हैं, उस टाइप के जो ग्रेनाइट्स आई प्रेफर मोर. आजकल तो बहुत ही डिफरेंट शेड्स, टेक्सचर, फिनिशेस, लेदर, इवन कैलिब्रेटेड आ रहे हैं. उसमें कोई ट्रीटमेंट्स, लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स. इट्स अ वंडरफुल मटेरियल इन फैक्ट. So you like using granite? I really like using granite. But joint का issue आएगा तो भी मतलब in open areas, when we are using rough or treated granites, वहाँ पे joint के issues आते नहीं हैं, क्योंकि we want that things like that only. Normally जो interior parts होते हैं यहाँ पे we need polish area. जैसे I will not prefer it in a washroom you can say, क्योंकि वहाँ पे joints के problem आ सकती है. But yes, it's a wonderful material. I use a lot of granite. ग्रेट सर. सो सर, जब आप किसी भी एरिया बिल्डिंग की इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हो तो सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे आप ध्यान रखते हो? Convenience. कन्वीनियंस. My interior should not provide difficulties to the end user. It should not be like कि मैंने इंटीरियर कर दिया, अब उसमें सिर्फ मेंटेनेंस ही करे जा रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे हैं. तो it should be easily maintainable. It should be very pleasant to the eyes, good looking. It should be very functional. Form अच्छी होनी चाहिए. Ultimately, we are paid for the forms, but Yes, functionality should be the main criteria. एंड सेटिस्फैक्शन. Yes, satisfaction. If it is functional, it will be satisfied. It is form based. Ultimately, it will be satisfied. अगर क्लाइंट बाद में परेशान है कि भाई हम मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं इसको, then I failed. सो सर, यू हैव बीन इन दिस फील्ड सिंस लॉन्ग, तो आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा, और आप शुरू से इसी फील्ड में जाना चाहते थे या देयर वाज समथिंग एल्स? आर्किटेक्चर मे बी वॉज बाय चांस, और मेरे पास मतलब इंजीनियर ड्राइंग तो मैं था ही. आई वॉज क्रिएटिव. तो आई विल नॉट से 100% लक, पर हाँ, मैं आई वॉज ऑल्सो गोइंग फॉर इंजीनियरिंग, पर उसमें आर्किटेक्चर, आई गॉट इन आर्किटेक्चर, और मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने जॉइंड आर्किटेक्चर. उसकी सारा एजुकेशन सिस्टम सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग था. द होल जर्नी अभी तक जो मैं किया, आई रियली हैव लव्ड इट. मुझे बहुत ही अच्छा लगा. आई थिंक इट इज़ द ओनली फील्ड जहाँ पे क्लाइंट खुश होता है तो प्रोफेशनल के पास आता है, प्रोफेशनल से खुश होके जाता है. नॉट लाइक अदर प्रोफेशनल्स जहाँ पे बेचारा परेशान है, अपने शरीर से परेशान है, अपनी इनकम से परेशान है, या अपने क्या कहते हैं किसी लीगल सिस्टम से परेशान है. हमारे पास बंदा बहुत खुश हो इंसान
क्लाइंट बड़ा खुश है तब आता है और खुश होके ही जाता है. So I'm really happy with my field. It is a wonderful profession. So you think the field is really good to go for the upcoming architects, and any advice for them? Yeah, it's a very wonderful field for upcoming architects or those thinking about architecture. पर सिर्फ वही लोग हैं जो सोचते हैं कि वो आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं. आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर शुड नॉट बी पुश्ड इन, मतलब कि भाई अपने हम आर्किटेक्ट हैं या हम चाहते हैं मेरा बेटा आर्किटेक्ट बने या इंटीरियर डिज़ाइनर बने और मैं उसको पुश करके कहूँ कि तू बन जा. दैट शुड नॉट बी देयर. कोई प्रोफेशन सेलेक्ट करो आप, बच्चा देखे या कोई फ्यूचर में देखना चाहता है तो वो उसके अंदर से निकलना चाहिए. यस, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी एन आर्किटेक्ट, आई वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ऑल द प्रोफेशनल्स आर गुड. इट डिपेंड्स कि मतलब आपका वो कहाँ है, where you want to go actually. Right, sir. I totally agree. So thank you so much for your answers. It was really valuable and it was pleasure to have you, sir. It was my pleasure also. I really liked this interview. It was very, very good and free. Yeah, so we all have gained a lot of knowledge and what is going on trending in this field right now. Thanks. So thanks again, and thanks to our viewers for watching the show. If there is any question, please put it out. We will get back to you. And keep watching our show. We'll meet in the next episode. Bye.